व्यूवर्स, वेलकम टू ग्रामर पॉप। आज का जो टॉपिक है वो है टेंसेस। टेंसेस का स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये आप जानते हैं। और टेंसेस का इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है ये भी आप जानते हैं। विदाउट टेंसेस यू कैन नॉट मास्टर ओवर लिटरेचर एंड ग्रामर। सो टेंसेस के बारे में एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में नोट किया #NoFuture, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है कि आज से लगभग 40-50 इयर्स अगर हम पहले की बात करें तो उस समय कोई फ्यूचर टेंस नहीं था। यस, मैं यही कह रहा हूं आपसे कि उस समय कोई फ्यूचर टेंस नहीं था। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहता हूं, आप नोट कीजिए। अगर मैं बोलता हूं जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, आप जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर यूज होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड वी यूज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन आप ये सेंटेंस देखिए, आई एम गोइंग टू गोवा टुमारो। नोट द सेंटेंस, आई एम गोइंग टू गोवा टुमारो। सो आपने क्या नोट किया इसमें आपने एक चीज देखी कि टुमारो वर्ड जो है दैट इंडिकेट्स टू फ्यूचर, लेकिन टेंस कौन सा है? आप जानते हैं ये टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, बिकॉज इन दिस सेंटेंस I have used helping verb is am and are and first form plus ing, of course. So this indicates to future. So it means present continuous tense indicates to future. So why there is a need of future? When we can do work with the present continuous tense, then there is no use of future tense. और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं, वो है जैसे एक सिस्टम होता है नियर फ्यूचर का, कि आवर स्कूल रीओपन्स ऑन 1 जुलाई एवरी ईयर। आप सभी जानते हैं कि समर वेकेशंस होती हैं जून में, और उसके बाद 1 जुलाई को सभी स्कूल दोबारा ओपन होते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये भी फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। जैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मैंने यूज किया है इसमें रीओपन्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स टू फ्यूचर। देन Why future? Why we are using future? क्योंकि ये सिस्टम में कुछ जो पहले जो टेंसेस थे, प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस, इनसे सभी काम नहीं हो सकते थे, इसीलिए फ्यूचर टेंस का एग्जिस्टेंस हुआ। सो अब 3 ही तरह के टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जो कमियां पहले प्रेजेंट और पास्ट में रह गई थी उनको फ्यूचर टेंस ने कंप्लीट किया। सो आज का जो वीडियो है वो टेंसेस पर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और द सिंपल प्रेजेंट टेंस। आइए, This is the brainstorming session for present indefinite or the simple present tense. Simple present tense is used for habits, for daily routines. Like you can see, these all are daily routines or habits where we can use present indefinite tense. Like take shower, brush teeth. I brush teeth daily. I have my breakfast at 9 o'clock. I watch television at 8 p.m. I go to school by bus. I take my dinner at 11 p.m. So these are the examples of present indefinite tense, and for daily routines and habits, these are the main points where we use present indefinite tense. Present indefinite tense is used to describe an action that is regular, true or normal. Like I always go to school by bus. That I always go to school by bus. It is my repeated action and regular action. Next is for universal truths. Also we use present indefinite, like the sun rises in the east, the earth revolves around the sun. These are the universal truths. We can use present indefinite tense for universal truths also. Next is for habits. I get up early in the morning. I take a cup of tea at 6 a.m. These are the examples for habits. Aisha brushes her teeth twice a day. So very good thing. So Aisha brushes. It means this is present indefinite tense. For things that are always generally true, like I live in Jhajjar, somebody lives in Lahore, I speak French, so these are generally true. So it means for the things that are generally or always true, we use present indefinite or the simple present tense. Next is
to refer future time, fixed future events on timetables calendars. Like the train leaves at 5 p.m. So suppose now it is 11 a.m. and we are familiar that the particular train leaves daily at 5 p.m. So that is future event, and this sentence is in present indefinite tense. So for the future time or fixed future events, we use present indefinite tense. Rules of present indefinite tense. For subject I, you, we, they, we use only first form of the verb, and for subject he, she, it means third person. They are the third person. We use first form plus s. Sometimes first form plus es, but it depends on the verb. Right? You can see here addition of s or es with first form of the verb in the case of third person. Next is the spelling of the verb in the third person differs depending on the ending of that particular verb. Suppose some verbs end in o, ch, sh, ss, x, z. We use es. But the condition is that only in affirmative sentences we use first form plus s or es, not in the case of negative and interrogative sentences like go. So you can see o is there, es will be added, ch, es, sh, es. So in the same way you can see. Next is for verbs that end in a consonant plus y, we remove the y and add ies. Y becomes I and es will be added. But again I am saying that it will be added only in affirmative sentences, not in the case of negative and interrogative sentences. I have seen many students, they add es in negative and interrogative sentences. That is absolutely wrong. Next is for verbs that end in a vowel plus y, we just add is. Play, plays. You can see vowel is there before y, so we will add s. Again the same point, only in affirmative sentences. We use do and does only in negative and interrogative sentences as a helping verb. Now, let us understand the rules of interrogative sentences. As you can see, with I, you, we, they, we use do, and with he, she, it, we use does. And work, always first form of the verb in present tense. If you have not subscribed my YouTube channel till now, please subscribe it and don't forget to press the bell icon for latest videos and